लेकिन आज आपको भी खुशी हो, उस मीटिंग में हमारी घोर विरोधी पार्टी कश्मीर की पार्टी पीडीपी की अध्यक्षा मोहतरम महबूबा मुफ्ती जी ने भरी मीटिंग में कहा कि मेरे एक मुस्लिम मित्र ने मुझे बताया कि वो गुजरात में उद्योग लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से समय मांगा। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत समय मिल गया, पर जब वो दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री को गए तो हैरान रह गए कि मुख्यमंत्री ने सारे संबंधित अधिकारियों को अपने कक्ष में बुला रखा था। आधे घंटे की चर्चा के बाद वही निर्णय हो गया और अब वो अपना उद्योग गुजरात में लगा रहे हैं। ये बात किसी और ने नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कही। कल से जो गुजरात की चीफ मिनिस्टर को लेके हमने उनकी तारीफ की है, जो बात मुझसे लिखी गई है वो बिल्कुल गलत है और मुझे बहुत अफसोस है कि जो लीडर अपोजिशन है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने हमें मिसकोट किया है। मुझे नहीं मालूम क्या वजूहत है कि इसलिए उन्होंने हमको मिसकोट किया है और मैंने इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो मेरी स्पीच का पूरा टेक्स्ट है उसको मेहरबानी करके रिलीज कर ले ताकि जो रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त किया जाए। देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर जो बीजेपी जमात है, अगर वो इतने डेस्परेट हैं कि कोई भी किसी की भी बात करे तो उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, मुझे लगता है कि उनके लिए बेहतर है जो उनके पास के एले फारूक साहब रहे हैं, जिनको मोदी साहब की आंखों में अल्लाह नजर आता है, जो फैसिनेटेड है मोदी साहब से इतना कि उनको ये भी भूल गया कि कुरान शरीफ हमारे प्रॉफिट ने हमें दिया हुआ है, न कि किसी और ने। तो मुझे लगता है उनके लिए अगर वाकई वो किसी मुस्लिम लीडर को मोदी साहब की तारीफ के लिए कोट करना चाहते हैं तो फारूक अब्दुल्ला से बेहतर आदमी नहीं होगा। And staying with Jammu and Kashmir, it's a moment of reckoning for the state now that militancy levels have fallen and peace is by and large a reality in the valley. The Omar Abdullah government is faced with the challenging task of dealing with unmarked graves. Identifying those buried is one issue. The larger and critical one is probing who killed whom and why, and that can be unnerving for any government. Our correspondent Irfan Qureshi reports from Srinagar on North Kashmir's unmarked graves. 2,156 unmarked graves at 38 sites, mostly along the line of control in North Kashmir. That's the assessment of the Jammu and Kashmir State Human Rights Commission after a 3-year investigation by an 11-member police team. It has now asked the Omar Abdullah government to use modern techniques to somehow identify those lying buried. There's a sense that this could bring some sort of closure for the families whose near and dear ones went missing since militancy rose its head in 1989. But there's also a looming fear that the whole exercise could trigger yet another wave of protests in Kashmir. The Association of Parents of Disappeared Persons, on whose petition the Commission probed the issue, claims that up to 10,000 people have gone missing during nearly 2 decades of militancy. हम चाहते हैं कि ये जो बेनाम कब्रों में है, हमें ये पता चलना चाहिए जो मास ग्रेव्स हैं इनमें हैं तो कौन ये। आखिर ये कहते हैं कि आपके जो हमारे खोए हुए हैं इस वक्त 10,000 लोग हैं तकरीबन, जिनके किसी का कोई पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है। हम ये चाहते हैं कि इनका कोई पता चले। जब ये कहते हैं कि ना जेलों में है ना कहीं है, हम चाहते हैं कि अगर इनका पता चले, जो ये कब्रों में है उनका भी हमें पता चले ये कौन है। जब इनका DNA टेस्ट हो जाएगा तो जिनके लापता हैं उनका भी पता चलेगा कि हो सकता है उनका भी उनमें से कोई हो, जैसे मैं हूँ हो सकता है मेरा भी हो उनमें। गवर्नमेंट का ओपिनियन ये है कि वो कहते हैं कि ये लोग जो है ये फॉरेन मिलिटेंट्स है जो यहाँ मारे गए। हम लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमने आपके सामने 50 केसेस ऐसे सबमिट किए जिसमें आपने इन 50 लोगों को मारा था फेक एनकाउंटर्स में और ये कहा था कि ये 50 के 50 लोग जो हैं फॉरेन मिलिटेंट्स हैं। लेकिन एक्सह्यूमेशंस के बाद जब उनको कब्रों से निकाला गया, उनका DNA टेस्ट हुआ या उनकी निशानदेही हुई, ये पाया गया कि 50 में से 47 लोग ऐसे हैं जो कि लोकल सिविलियंस थे। उन 47 में से 46 सिविलियंस थे और एक लोकल कश्मीरी मिलिटेंट था। तो इससे पता चल जाता है कि इन कब्रों में कौन दफन है। इसीलिए हम चाहते हैं कि
हम लोग ये नहीं कहते गवर्नमेंट से कि सबके सब लोग जो है वो लोकल सिविलियंस होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लोकल मिलिटेंट होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फॉरेन मिलिटेंट्स भी होंगे, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई भी एक रिकॉर्ड नहीं है, आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल, गवर्नमेंट के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये लोग कौन है। Separatists and some sections say knowing who lies buried is important enough. But what's crucial is bringing to justice those responsible. The Human Rights Commission has also sent a notice to the state government on a petition filed by the Association of Disappeared Persons about the presence of 2,717 unmarked graves in Jammu's Poonch district and 1,127 in Rajouri. जो आर्मी का जो स्टेटमेंट है उन्होंने कहा साहब ये प्रोपेगेंडा है और इसकी कोई बेसिस नहीं है। तो उसके बाद जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो 100 मोटो कॉग्निजेंस लिया और उनमें इंक्वायरी जो अभी इंक्वायरी जो पब्लिक हो गई है उसमें उन्होंने हमको विंडिकेट किया, बल्कि एक हिसाब से जो उनके फिगर्स हैं उसमें उन्होंने कहा है कि हमने तो कहा था 57 ग्रेवयार्ड में 2373 अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स है, और जो उनका रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 38 ग्रेवयार्ड में वहाँ पे है तकरीबन 2700, जिसमें कि उनकी इंक्वायरी के मुताबिक 554 आर ओनली लोकल, मीनिंग दे आर आइडेंटिफाइड, बाकी 2100 जो है वो उनके हिसाब से वो अनआइडेंटिफाइड है। But there's a large issue at stake. Positive DNA matches with the missing may not settle the debate over how they died. Were they militants or civilians? Did they die at the hands of the security forces or militant groups? Were they killed in an encounter? If yes, whether it was fake or genuine? Tough questions with no straight answers. On August 20th, the first official inquiry report of the Human Rights Commission suggested that there were 2,730 unmarked graves across Baramulla, Bandipora and Kupwara districts. It said 574 of the dead were buried by locals, leaving 2,156 graves still unidentified, though most could be local militants. Several voices are speaking in different tones about how to move forward now. The Awami National Conference wants social bodies to come forward and speak up for those who were silenced, as it puts it. ये मेरा वो घर वाला है, उसको 10 साल हो गए, वो लापता हो गए, अभी से वापस नहीं आया, घर में कुछ गुजारा नहीं चल रहा जी। देवर जी एक वो नतवन है, वही थोड़ा बहुत गुजारा करता है और गुजारा घर में कुछ नहीं, और सासू में उसको आंखों की रोशनी भी नहीं है, वो सुनती भी नहीं है। मैं किसी के कपड़े धोती हूँ, किसी का बर्तन साफ करती हूँ, उसी पर गुजारा करती हूँ। Apart from these graves, which are I think in thousands in number, a parent or a brother or a sister would really like to know whether his loved one is living or not, because they are waiting for that day that their loved one will just walk in, and they are helpless. Absolutely. There are very, very specific instances wherein you have killed people who had nothing to do with guns, who had nothing to do with arms, ammunition, and those I believe are in hundreds. And the persons who are responsible for this carnage, they have to be brought to book. Chief Minister Omar Abdullah favors a Truth and Reconciliation Commission on the lines of the South African model to probe all cases of human rights abuses since 1989, when armed insurgency erupted in the state. The main opposition, People's Democratic Party, wants DNA profiling of the bodies and a probe into deaths, while hardline separatist leader Syed Ali Shah Gilani would rather have the United Nations send a fact-finding mission. हम भी जानना चाहते हैं इन कब्रों में किसको लिटाया गया है। मैंने हुकूमत संभालने से पहले भी ये बात की है, उसके बाद भी दोहराई है कि देखिए आप, इन सवालों का जवाब जो है इतनी आसानी से हम हासिल नहीं कर सकते। मैंने इसलिए उस वक्त कहा था कि हमें एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जरूरत है। इस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को ये एजेंडा सौंप दिया जाना चाहिए कि पिछले 20-21 साल में जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो मिलिटेंट के हवाले से हुए हों, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से हुए हों, जहां पे सवाल उठे हैं, उन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के अलावा और कोई चारा है नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाना चाहिए, ताकि वो जम्मू कश्मीर के पूरे
खित्ते का जायज़ा ले लें और फिर ये देखें कि यहाँ कितनी नामालूम कब्रें हैं, कितने कब्रिस्तान हैं और उन कब्रिस्तानों में किन लोगों को दफनाया गया है। ये पुरजोर मुतालबा है कि ये जो ट्रुथ रिकन्सिलेशन के नाम से एक कमीशन बनाया जा रहा है, हम उसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे और सख्ती के साथ मुस्तरद करते हैं। अभी इन्होंने सुरंग कोट में एक और गुमनाम कब्र बनाई क्योंकि उस लड़के की शिनाख्त का पता लगाए बगैर पहले कहा वो हिंदू है, फिर उसको दफन किया गया। तो इसी तरह से जो 2000 लोग इसी तरह कब्रों में फेक एनकाउंटर या दूसरे तरीके से दफन किए गए हैं, हम चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इंक्वायरी हो और दूसरे उनके डीएनए, क्योंकि अभी उनके जिस्म में कुछ ना कुछ बाकी है जिसका डीएनए टेस्ट हो सकता है, ताकि जिस खानदान से वो ताल्लुक रखते हैं उनके लवाहिकी इनको इंसाफ दिलाया जाए। Punjab saw itself being maimed by militancy but stood up. The scars remain though, and it's no one's case that the families can forget those who died on either side of the divide. Kashmir is different though, like every militancy affected area is. In the graves lie buried the pain and the bloody history India cannot afford to ignore. The reports of unmarked graves and hundreds of disappearances cases in Kashmir Valley has evoked a hot debate for justice, which has made State Human Rights Commission finally to issue an order for DNA profiling of unidentified bodies. But the vital concern for the victim families will be none other than the ultimate justice. With camera person Ajaz Nazki, Irfan Qureshi, Day and Night News, Srinagar. Joining us on the phone line from Srinagar is a special correspondent of National Daily The Hindu, Mr. Shujat Bukhari. Good evening, Mr. Bukhari. You have extensively covered the trouble in the valley. Were you surprised when you heard about the existence of these graves? No, not at all. I think this phenomenon has been part of the Kashmir conflict for last 21 years. And from time to time, the human rights bodies, as also the journalists and the newspaper people, have been highlighting the issue that there are unmarked graves which exist in Kashmir, because there are hundreds of people, maybe thousands of people who have actually been missing for the past 20 years. And most of the people have been actually, but they have disappeared in custody of the armed forces. So I think we were not surprised, but surely we were surprised at one thing for sure, which is that the investigation about these graves came from none but the police. And I think it was a surprise in the sense that people in Jammu and Kashmir, and particularly in Kashmir Valley, had lost the faith in the system, faith in the state. So when it came from an investigation agency of Jammu and Kashmir police, we were surely surprised. But I think at the end of the day, this was somehow vindicating the concerns and the apprehensions and the concerns of the people, that so many people have, disappeared, and there are people who have been buried without proper burial, and there is no identification of these people. Right. Do you think the Omar Abdullah government would be able to pinpoint responsibility for these killings? I think in any case, it's not a question of being Omar Abdullah in power, or Ghulam Nabi Azad or Mufti Saeed for that matter, but I think it's the question of the political will of the government to do justice with the people, since truth